Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Your voice is not clear. Maybe some network issues are there. Yes, ma'am. Yes, Abhishek, my voice is clear. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, Abhishek, you are from Rajasthan? Yeah, outside the Rajasthan. Ma'am, I am pass out in 2018 branch. अभिषेक आपका आवाज अच्छा नहीं आ रहा है. I am same college pass out to 18 में. And you, yes, what is your pronunciation, please? It's yes, Dema, ma'am. Yes, Yes, Dema. yes, demo. Okay, and I'm from Arunachal Pradesh. you are from Arunachal Pradesh. Yes, Okay. ma'am. And number of the student in your class is 3. Yes, na? Number of the Yes, Yeah. ma'am. student. Who is there and one is. You have any idea? Siddharth. Yes, Siddharth. I Siddharth. don't know. So both of you have studied statistics before this. No, ma'am. Statistics, so I think you are studying your graduation level, and I think in 11th 12th is also you have studied statistics. Yes, you have idea about the distribution, some distribution. Further, we have studied distribution, binomial, Poisson, exponential, normal distribution. You have seen. You have any idea about this? No, ma'am. Both of you say no. मैम 18 के Actually, पास आउट होने के बाद में कभी इसमें ज्वाइन नहीं किया ना, तो एक बार वापस रिवीजन करना पड़ेगा. नहीं, मैंने okay. ये नहीं बोला कि आपको मतलब आता है या नहीं आता. इट इज अ सेकंड बेटर. मीन्स मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप लोगों ने पढ़ा है ना इससे पहले कि मतलब अपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे आई थिंक सबने स्टैटिस्टिक्स तो एक पेपर इज ऑलवेज देयर. मतलब एक स्टैटिस्टिक्स का पेपर तो हमेशा होता है. यस. जी मैम, पढ़ा है अभी तक में, पर याद नहीं है अभी थोड़ा. ओके, नो प्रॉब्लम. सो आप लोगों मतलब आप यू आर फ्रॉम एम टेक, so you have any idea about simulation? Sorry, ma'am. Simulation. Stimulation. Yes, simulation. You have any idea about the basic of simulation? Yes, Abhishek. No, Yes, ma'am. no. Both of you are working something. मतलब आप कहीं पर काम कर रहे हैं? You are doing job or not? Yes, नहीं ma'am. मैम, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं. Okay, you are preparing for the government job, and you? Ma'am, I'm teaching actually. आप टीचिंग करते हो. Okay. जी. तो सिद्धार्थ आएगा या नहीं आएगा? You have any idea about the सिद्धार्थ? कंफर्म नहीं है मैम, वो जॉब कर रहा है.
अच्छा, ही इज इन जॉब, इट इज नॉट मतलब रैंडमली है कि आएगा या नहीं आएगा, इट्स नॉट फिक्स. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so we can start the class. Yes, ma'am. Okay, so today we can start the topic is simulation. So module first is covered by the Rahul sir and module second is covered by me. Okay, so both of you are comfortable with English and Hindi both language, you know na? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, this PDF file is visible. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, both of you PDF file is visible. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so today we will start simulation. First of all, we understand the what is the simulation. Then we understand how can we do modeling. कैसे किया जाता है, okay? But first we Okay. understand what is the simulation. If you are doing any मतलब आप किसी भी company में when you are doing programming, so simulation is very important. Okay. So first of all we understand the what is the basic. इसके लिए आपको क्या होगा कि अगर आपके statistics वाला part अच्छा होगा ना, if your statistics part is मतलब होता है ना some basic मतलब जो भी basic होता है statistics का, मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ है ऐसा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर, समथिंग है ऐसा कुछ, बस आपको उनका बेसिक आइडिया होना चाहिए. डीपली नॉलेज आई डोंट वांट, यू हैव जस्ट आइडिया अबाउट द बेसिक ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, मतलब ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा है, ऐसा कुछ होता है, तो इससे क्या होगा यू कैन इजीली रिलेटेड ऑल दिस थिंग्स, हर एक चीज को आप रिलेट कर पाएंगे एक दूसरे से. ओके, तो आज हम सिर्फ व्हाट इज द सिमुलेशन, सिमुलेशन क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अंडरस्टैंड. So what is the meaning of simulation? Simulation means क्या होता है? To simulate is to try to duplicate the characteristic of a real system. And what is simulation? We will study mathematical simulation model of real system to help make business decision. Means when we take to the decision in business, then we have used the mathematical simulation. And simulation is one of the most widely used decision modeling technique. Means आप किसी भी area of field आपके पास हो, if you are doing research, आप अगर रिसर्च में हो, and if you are doing any job in any company, when you are doing any programming, then then your decision it is based on simulation. So तो सिमुलेशन में क्या होता है, व्हाट इज द वी आर डूइंग सैंपल साइज. सैंपल साइज यू नो व्हाट इज द सैंपल, वी हैव अ पॉपुलेशन, वी हैव टेक सम पार्ट ऑफ द सैंपल, तो सैंपल, तो सैंपल साइज इज super important, means it is very important in the statistics. Okay, so what is this, it is hard to make a generalization about behavior from one person. For example, suppose the horror book. I have a one horror book. I like horror book, but that does not mean everyone does. Means suppose अगर मैंने कहा कि what is the meaning of this? अगर मैंने बोला I like horror book, it is not necessary कि Abhishek is also like the horror book and S is also like the horror book. So so and sometimes it is just too impractical to run experiment to collect data. Suppose you like a rolling the dice, you know dice. So when you're rolling the dice 500 times, suppose you are rolling the dice 500 times, so it is not possible कि we can मतलब होता है ना each every dice कि हमें क्या मिला, 1 आया, 2 आया, 3 4 5 6, it is not possible होता ना, in practical it is not possible. जब हम 500 टाइम डाइस टू रोल करें and we see that कि what is the outcome is come कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5, it is not possible. So when we have this type of problem,
to get around this problem, statisticians and students create simulation statistics. तो अगर हमारे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है कि we are unable to collect the data, then so we have used simulation statistics. So I will again define what is this. The sample size is very important in statistics, and it is hard to make a generalizations about behavior from one person. For example, suppose I like horror book. I like horror book, but that does not mean everyone does. So, and sometimes it is just too impractical to run experiment to collect data, like rolling a die. We have rolling a dice 500 times. So, to get around this problem, statisticians and students create a simulation statistic. So, what is the in simulation is real, means what we are doing is real. So simulation statistics is using artificially generate data. We have generate the data is artificially we generate the data in order to test out a hypothesis or a statistical method. या तो we have generate data, whatever data we have generate, या तो hypothetically we can generate or by statistical method we can generate. So whenever a new statistical method is developed or used, there are assumptions that need to be tested and confirmed. Statisticians use simulated data to test them out. So, what is the simulation is real? Yes or no? Yes, it is real. How? Simulation statistics is using artificially generate data. जो data हम simulation में we have used ना, it is not a real data. We have used just artificially data or hypothetically data. So, in simulation statistics, using artificially generate data in order to test out a hypothesis or statistical method. Whenever a new statistics method is developed or used, there are assumptions that need to be tested and confirmed. And statisticians use simulate data to test them out. Okay. So yes, student, it is clear what is the simulation first of all. Yes, sir. Yes, ma'am. Okay. Then the process of simulation. What is the process? Some simulation. How can we done the process? So how can we do simulation? First of all, what is your problem? आपका जो भी problem you have, मतलब you just define your problem. What you identify, आप क्या मतलब होता है? What you want to analyze, आप क्या analyze करता? You just define a problem. First of all, what is the process in simulation? You define your problem, means you define your objective. So you define your problem, then introduce important variable. In your problem, जो भी your variable is there, whatever variable in your problem, suppose आपके पास data है price, demand, मुझे mechanical का I don't have too much knowledge, so I have take the data of real life related, okay ना? So suppose आपका define आपने problem क्या, उस problem में you have many variable, वो सारे always variable is there. When you are in marketing company, sales company, so what is the price, what is the demand, what is the supply, so you have many types of variables there. So what is this? Second is introduce important variable. जो भी variable you have used, जो भी variable आपको चाहिए, you just introduce, means उनका value given करना या you identify उनका value. What is? So you just define your variable, introduce important variable. Then you construct simulation model. Then you have construct your simulation model. आप अपना जो भी simulation model we have construct. अभी आपको नहीं आता कि how can we construct, बस you just understand, you just simulation model you have construct. Then what to do? Specify values of variable to be tested. Specify values of variable to be tested. Means जो भी अपने variable का value specify, you have specified. You just be tested it is right or not, means it is the satisfied your condition or not. Then you conduct the simulation. Then we have simulation. Simulation means nothing. Simulation में क्या
क्या होता है, सपोज आप ऐसे एग्जांपल लीजिए, आपके पास 100 का डेटा, पॉपुलेशन कितना आपका 100 का पॉपुलेशन है, यू हैव 100 का पॉपुलेशन, यू जस्ट टेक द सैंपल ऑफ साइज 5 का आपने सैंपल लिया 5, लेकिन आपने जो 5 का सैंपल लिया, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारे 100 के डेटा तो फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव करे. ओके, व्हाट इज दिस, यू हैव ए नंबर ऑफ डेटा, कितना आपके पास 100 है, 100 में से आपने कितना सैंपल लिया, 5 का सैंपल यू हैव टेक, टोटल पॉपुलेशन 100 है, यू जस्ट टेक द साइज ऑफ द सैंपल इज 5. तो वोटेड 5, जो भी आपका 5 आया उसमें सैंपल, सम टाइम होता है कि वो आपके डेटा तो फुली रिप्रेजेंटेटिव कर दे, बट मेनी टाइम इट इज कि वो आपके डेटा तो, जो भी आपका पॉपुलेशन डेटा है, इट इज नॉट डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट इज दैट, मतलब ये क्या बता रहा है डेटा, इट इज नॉट टेम्पल. तो क्या होता है, ये जो मैंने 5 का सैंपल लिया है ना, इस 5 का सैंपल तो मैं 1000 टाइम लूंगी. वन टाइम 5 का सैंपल आया, देन सेकंड टाइम 5 का सैंपल आया, थर्ड टाइम 5 का सैंपल आया, फोर्थ टाइम, तो मैं 1000 टाइम 5 का सैंपल लूंगी, देन उसका एवरेज फाइंड करूंगी, देन जो भी मेरे पास एन एंड ऑन एंड एवरेज जो आएगा वो मेरा डेटा तो फुली रिप्रेजेंटेड करे. ये बेसिकली मीनिंग होता है सिमुलेशन का. जो होता है मेरे पास पॉपुलेशन का साइज 100 है, उसमें से हमने सैंपल साइज 5 लिया है, वो 5 हमारा, वी नो कि एक जो मैंने फर्स्ट टाइम सैंपल लिया, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये मेरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, जो बोल रहा है वो बताएगा, बट तो क्या होता है उस 5 के सैंपल तो मैं कितनी बार लूंगी, मैंने फर्स्ट टाइम लिया तो 5 का कुछ सैंपल आया, सेकंड टाइम लिया तो 5 का कुछ और सैंपल आया, थर्ड टाइम लिया 5 का कुछ सैंपल आया, देन अगर मुझे फाइंड करना व्हाट इज द मीन ऑफ द पॉपुलेशन, तो मेरे पास ये जो सैंपल आया ना 1000 टाइम, इन 1000 टाइम में उनको ऐड करूंगी, देन आई हैव डिवाइड बाय द 1000, देन वी हैव गॉट वन वैल्यू, तो इट इज रिप्रेजेंट अवर मीन. तो जो भी वैल्यू आएगा ना, ये हमारी मीन को अच्छे से व्हाट प्रेजेंट करेगा. ओके, तो इट इज अ सिमुलेशन. देन एग्जाम द रिजल्ट, मतलब जो भी आपके पास रिजल्ट आया उसको यू जस्ट एनालाइज करना है एंड सेलेक्ट करना कि विच रिजल्ट, जो रिजल्ट यू हैव गॉट, कि सेलेक्ट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब जो भी रिजल्ट यू हैव गॉट, किसमें से बेस्ट आपकी प्रॉब्लम को कौन अच्छे से डिफाइन कर पा रहा, मीन विच गिव द बेस्ट रिजल्ट योर प्रॉब्लम, मीन्स you simulate, then you examine the result, then you just see, check करना कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, then select best course of action, means select best result on things. Yes student, it is clear what is the process of simulation. यस मैम. ओके ना, सिमुलेशन इतना टफ नहीं है, बट सम टाइम क्या होता है ना, हमारे पास पॉपुलेशन इतना होता है कि मतलब रियल पॉपुलेशन वी डोंट हैव, हमारे पास रियल पॉपुलेशन नहीं है, देन व्हाट वी हैव जनरेट हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, जो हमारे डेटा को जो हमारी प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करे, उस डेटा को सेटिस्फाइड करे, देन वी हैव सिमुलेट मींस वी जस्ट टेक द अगेन एंड अगेन, जैसे मैंने बोला ना 100 का पॉपुलेशन है, उसमें से मैंने 5 का सैंपल ले लिया, तो 5 का सैंपल समटाइम मेनी टाइम्स ये होता है कि इट इज नॉट फुल प्रेजेंट अवर पॉपुलेशन. सपोज मैंने 5 का सैंपल का मीन निकाला, जो मीन वो आ रहा है, जो पॉपुलेशन मीन आ रहा है वो था डिफरेंट, वेरी कर रहा है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग, कि क्या मतलब वो अभी लेने का, तो अंडर सच कंडीशन वी हैव यूज्ड सिमुलेशन. सिमुलेशन में क्या होता है, हम 5 का जो सैंपल लिया ना, वी हैव टेक 1000 टाइम, वी हैव टेक, तो 1000 टाइम वी हैव टेक, तो ऑन एन एवरेज जो एवरेज हम निकालेंगे ना, ऑन एन एवरेज 1000 है, तो 1000 का जब व्हेन वी हैव टेक द एवरेज, तो ऑन एन एवरेज it is present our population mean. So it is clear what is the process of simulation. यस मैम. मैम एवरेज निकालेंगे तो लेंथ नहीं हो जाएगा. Yes, please repeat your question. आपने क्या बोला, एवरेज निकालेंगे तो लेंथ ही नहीं हो जाएगा, ये जो 100 टाइम और बाद में जो, मुझे आपका क्वेश्चन तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आई विल अगेन रिपीट. जैसे मैंने 5 का सैंपल लिया, तो वो 5 सैंपल 5 वैल्यूज आई हैव, तो मैं उसका फर्स्ट टाइम में उसका मीन निकालूंगी. तो 5 का सैंपल सपोज मेरे पास 1 2 3 4 5 है, तो 1 + 2 + 3 + 4 5 डिवाइड बाई 5, तो मेरे पास कितना एवरेज आया, 1 एवरेज आई हैव. तो मैंने क्या बोला, आई हैव रिपीट दिस प्रोसेस 1000 टाइम, तो मैंने इसको 1000 टाइम आई हैव रिपीट, तो मेरे पास कितने 1000 मीन आई हैव. जब आपके पास 1000 मीन है, अगर आपने सिंगल में निकाला, तो आपको इस 1000 जो मीन आया ना, यू हैव
In 1000 mean, you just add all this mean, divide by 1000, so you have got one single mean. Yes, Abhishek, it is clear. Yes, ma'am. है ना, समझ में आया ना, तभी यस बोला। मेरी क्लास में ऐसा झूठ मूठ वाला यस नहीं थी, क्योंकि होता ना फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता आगे चल के, मैम ये नहीं आया, नहीं हो। ओके मैम मेरे को कंफ्यूजन था जो दूर हो गया आपसे। ओके नहीं, मैं सिर्फ मतलब इट इज माय फर्स्ट क्लास इन विथ यू, तो इसलिए मैं आई विल टेल यू कि मतलब अगर समझ में आ गया तो ओके है, ओके नहीं समझ में आता यू जस्ट आस्क मी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मेनी टाइम, जितनी देर तक आपको नहीं समझ में आ रहा तब तक। ओके ओके देन यूज ऑफ सिमुलेशन। व्हाट इज द यूज ऑफ सिमुलेशन? तो सिमुलेशन इज वेरी, मतलब होता है ना सिमुलेशन इन ईच एंड एवरी फील्ड। So sometimes simulations do not lend themselves to precise mathematical treatment. Often may be difficult, time-consuming, expensive to analyze. In these situations, in these conditions, simulation may approximate real-world results. So, simulation में क्या होता है? We have a limited time. बहुत सारा होता है. First of all, we understand what is the use of simulation. So, what is the use? First is simulation modeling solve real world problem safely and efficiently. Means जो भी आपका real world से related problem are there, it is solved by safely and efficiently. Then second is it is important method of analysis which is easily verify, communicate and understand. ये जो simulation का method, it is very easily we can define, easily we can verify कि what we are doing, जो हम कर रहे हैं, it is right or not. Easily we can communicate to other and it is very easy to understand. And third is simulation modeling is experimentation on a valid digital representation of system. And I have just few use I'm writing. Computer simulation is used in business. हम computer simulation का where we have used, हम business में भी we have also used when conducting experiment on a real system is impossible or impractical often because of cost or time. Sometimes क्या होता है कि we don't have a limited time. Sometimes क्या होता है we have a limited time, we have a limited cost. So it is impossible, impractical means we have मतलब होता है it is impossible to collect the data on each and every unit of the population. So under such condition, the computer simulation is used in business when conducting experiment on a real system is impossible or impractical. So under such condition, we have used simulation because we have a limited cost, we have a limited time. The ability to analyze the model as is run set simulation modeling apart from other methods, such as those using Excel or linear programming. Means when we have a simulation technique, so one software simulation software is also there, so we can use the simulation software. So the ability to analyze the model as is run set simulation model apart from the other method. When we have calculated the simulation आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं. You have used many software. आप C प्रोग्रामिंग से आप सिमुलेशन कर सकते हैं. Excel is also used linear programming and simulate 8 is one software is there. R, you have listened the word R programming? No ma'am. R नहीं पढ़ा. और आया नहीं अभी C++. मैम C++ डाटा स्ट्रक्चर पे नहीं आया था. Okay, R is the one. R means capital R is there. Capital R. It is the R programming and it is the open software and it is very मतलब होता है ना everyone is in whatever जो भी statistics field में student are there in research, so almost everyone is use R software for the simulation. Okay, because it is the open software. First is important, it is open software and जो भी आप करना चाहते हैं ना इसके अंदर मतलब R में it is all functions, all types of function is defining this. So it is a use of simulation. Then what is the advantage of the simulation? So I will define one by one. First is simulation is less
costly than real life experimentation. Second, test different idea under the same circumstances. Third, determine the long-term impacts of process change. Then fourth is determine potential impact of random event. Five is can answer what if questions. Six is time comparison is possible. Third is also allow study of interaction among the variables. So first of all, we understand what is a simulation is less costly. What is the meaning of this line? Means simulation is less costly than real life experiment. Simulation is less costly. How? Experiment in the real world. मतलब जब आप रियल लाइफ मीन्स रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट यू हैव डन तो यू मोर कॉस्ट हाउ आपको नंबर ऑफ पीपल डेटा कलेक्ट करने के लिए यू वांट आपको नंबर ऑफ पीपल व्हेन यू हैव कलेक्ट द डेटा तो यू वांट ए नंबर ऑफ पीपल तो नंबर ऑफ पीपल यू वांट सो जब आप पीपल को अरेंज करेंगे तो उनका क्या होना चाहिए इट इज मोर प्रोफेशनल हाउ कैन वी कलेक्ट द डेटा सो experimenting in the real world, a range of potential costs. They're not only the capital expenditure of changing process and hiring new staff or purchasing new equipment, but also cost associated with the consequence of these decisions. So simulation is less costly than real life experimentation. For example, if you reduce staffing but cannot cope with the workload, you could lose customer revenue and market share. So simulation is like when we have using simulation, so this side effect is not there. Second is test different idea under the same circumstances. Means when first time you create your simulation model, आपने first time अपना simulation model you have create, then whatever the variable are there in your simulation you can change. आप मतलब model आपने same रखा, then you can change your variable. Then you also observe that you can also observe what is the change when we have changed the variable, then what is the impact in our simulation model. So test different idea under the same circumstances. Then what is the next is determine the long-term impact of process change. What is the meaning of this? All the process change may have immediate impacts in the short term. How can you be sure that changes will also have the desired impact for the long term? For example, suppose you take one example, you are hiring 3 more doctors with the aim of reducing patient waiting times. Means आपने क्या किया? You are hiring 3 more doctors with the aim of what is your aim? Aim is reducing patient waiting time. और the next 2 year आपने next 2 year के लिए आपने कुछ नए डॉक्टर को और हायर किया कि we can reduce the patient waiting time. जो patients wait करते we can reduce. So you will normally need to be wait 2 years. आपको किसके लिए 2 years to measure the success against investment. With simulation क्या होगा? With simulation you can run 2, 10 or even 100 years. So you can compare with this. In real life scenario में क्या होता है? अगर मुझे किसी मतलब I want to reduce my patient waiting time to reduce करना है तो मैंने 2 डॉक्टर्स को हायर किया for 2 years. So अरे इसका रिजल्ट आने के लिए I will wait for the 2 year. Next 2 year मुझे वेट करना पड़ेगा कि what we want, जो मुझे मेजर करना था कि I have success or failure, मतलब पेशेंट रिड्यूसिंग टाइम हुआ या नहीं हुआ. देन विद सिमुलेशन में क्या होता है? यू कैन रन for the 2 years, 10 years, 100 years into the future in a second. So this provides insight to make confident decisions out instead of when it could be too late to change the outcome if you have already invested valuable time and resources. So simulation, it is the give the idea of the long-term impact of your process change. Then next is the what is next? Next is determine the
potential impact of random variable. Then what is the meaning of this? Meaning of this is this: other tools such as spreadsheets can effectively model a scenario, but what happens if you have need to determine potential impact of random patterns throughout your system, like the effect of machine breaking down on an assembly line or staff absence in a hospital. So, without this random element, a spreadsheet model can misuse within the system entirely and the appear as if nothing is wrong. So, even when the real life system is displaying visible problem like the backlog or queues. So, only simulation is capable. Simulation is capable of incorporating the randomness that can occur in real world system. So, you can see the consequence of event being delayed by resource not being available when they are needed. So, what is the use of determining the potential impact of random event? Means आप whatever model you have applied तो रियल लाइफ में क्या होता है when we have applied तो randomly अगर हमारे पे गेस्ट आ जाते हैं then we are thinking कि खाने के लिए क्या बना है what is but in simulation में क्या होता है we can add all the random event then we change the potential impact of our model. Then next is what is the next what if scenario testing. Yes student, are you understand? समझ में आ रहा है आपको? यस मैम, ये पीपीटी विजिबल नहीं है। हाँ यस मैम, PPT is visible right now? Yes, ma'am. No, ma'am. Okay, maybe नो मैम। yes student, it is clear. समझ में आया? I have defined 4 advantages of simulation. It is almost 4 5. So in next class we have understand what is the advantage and disadvantage of the simulation, then Monte Carlo simulation. So yes student, you have any doubt till now? मैम वो थर्ड पॉइंट एक बार वापस रिपीट कीजिए ना। Third point. What is the third point? Wait 1 minute. Third point is एडवांटेज से ऊपर। determine the long-term impact of process change. Yes, this is नहीं मैम, एडवांटेज से ऊपर सिमुलेशन में जो था ना उसमें। use of simulation. यस मैम, इट्स नॉट एट टर्म्स हियर सिमुलेशन मॉडलिंग इज। It is the one होता है ना जैसे हमने I just given the one line. So what is the meaning of this line? It is a simulation modeling is experimentation on a valid digital representation of a system. Means when you are doing simulation modeling, is the experimentation means आपके पास जो भी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन आपका सिस्टम है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट ए वन सिस्टम फॉर द सिमुलेशन मॉडलिंग, जो व्हाटएवर जो भी आपका डिजिटल सिमुलेशन मॉडलिंग इज एक्सपेरिमेंटेशन ऑन इट, किस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है हम सिमुलेशन मॉडलिंग का, जो भी सिमुलेशन मॉडलिंग इफ आई वांट टू डू तो किस पर मैं आई विल एक्सपेरिमेंट, ये किस पे एक्सपेरिमेंट करूंगी, it should be on a valid digital representation of system होना चाहिए, then we are apply the simulation modeling. Yes, it is clear? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, any doubt? So आज का क्लास यहीं फिनिश करेंगे हम लोग. Yes student.